Okay, this is our lecture number 10, and this is the last lecture of our series of lectures which we covered in RCD 1. Okay, after this lecture, there will be just 1 week before your exam. If you have any questions, you can post your questions to my assistant, teaching assistant, and we will try our level best to answer your questions on time. Okay. This lecture is on the serviceability criteria of ACI code for deflection and crack width. Although this is a very big topic, but we just wanted to give you a glimpse of this very important topic, just to make you aware that only the strength design is not enough. The strength design is the design when we calculate area of field based on the bending moment and shear. So this is the criteria. This criteria is called the strength design. However, there is another criteria which is called serviceability criteria, and that is related to the deflection and crack width instead of bending moment and shears. Okay, and side by side, the serviceability criteria must also be checked in a complete design practice. The deflections are covered in section 1. Cracking of RC frames is covered in section 2. The lecture's objective are that you'll be able to see what short-term and long-term deflection are, crack formation, and some relevant information on the ACI code. Section 1 on deflections. It is important to maintain control of deflection in reinforced concrete structure so that members designed mainly for strength at prescribed overload will also perform well in normal service. Excessive deflections can lead to cracking of supported walls and partitions, ill-fitting doors and windows, poor roof drainage, misalignment of sensitive machinery and equipment, and visually offensive से. मतलब ये है कि हम एक बिल्डिंग जब डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें बीम्स डिज़ाइन में आप लोगों ने देखा होगा, और स्लेब डिज़ाइन में कि हम डक्टिलिटी की बातें करते हैं कि डक्टाइल हो और फेलियर होगा उस बेंडिंग इस बेंडिंग मूवमेंट पर, उसको हम फैक्टर करते हैं, फिर स्टील निकालते हैं और शेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन अगर उससे पहले हमारे बीम्स में और स्लेब्स में इतनी डिफ्लेक्शन आ जाए कि वो डिफ्लेक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि साइकोलॉजिकली वो फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस उसमें लोग जो है अंदर न ठहर सकते हों, तो अल्टीमेट तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं. और इस वजह से अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए, और इसी तरह अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसमें हमारे लिए जो डोर्स वगैरह हैं, विंडोज़, वो इसमें शीशे भी टूट जाते हैं, उसके फ्रेम भी टेढ़े हो जाते हैं, रूफ ड्रेनेज ख़राब हो जाती है. तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स है कि ये स्ट्रेंथ के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, और इसलिए अक्सर बिल्डिंग्स में स्ट्रेंथ डिज़ाइन का इतना इशू नहीं होता जितना कि सर्विसिबिलिटी का इशू होता है. 90% ऑफ द बिल्डिंग्स में तकरीबन सर्विसिबिलिटी इशू होता है. 10% में से भी कम बिल्डिंग में स्ट्रेंथ का कुछ यानी कोलैप्स एक्चुअली होता है. अक्सर में डिफ्लेक्शन हो जाती है या क्रैकिंग हो जाती है. तो ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम तो स्ट्रेंथ की बातें कर रहे थे, लेकिन साइड बाय साइड ये चीज़ें भी चेक करनी होती हैं डिज़ाइन प्रैक्टिस में. फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस. शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन वो होती है कि बस जैसे ही लोड आप अप्लाई करते हैं, यानी कि जब रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की केस में जब स्लैब से या बीम से हम शटरिंग हटाते हैं, फॉर्म वर्क हटाते हैं, तो लोड फ़ौरन वो ले लेता है और उसको उसी वक्त जो डिफ्लेक्शन आ जाए फ़ौरन उसी वक्त उसको शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कहते हैं. और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ये है कि सस्टेन लोड्स पर, यानी उसके अपने लोड्स की वजह से या उसके ऊपर कुछ सुपर इम्पोज डेड लोड हम रख दें, उसकी वजह से काफ़ी वक्त में क्रीप और श्रिंकेज की वजह से फिर कुछ और डिफ्लेक्शन भी आती है, उसको लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन कहते हैं. और इमीडिएट डिफ्लेक्शन आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस में यू वुड हैव कैलकुलेटेड सेवरल टाइम्स डेल्टा using the typical equation of elastic deflection equation, which is typically delta, which is elastic deflection, is a function of load, span, support divided by EI. You would have seen many equations like this. Some of the equations for your knowledge are shown here. This is a simply supported beam in case 1. Mid-span deflection is calculated by 5 by 384 WL 4 by EI in case 2, case 3. So all of them
can be all of these equations can be used to calculate delta in the relevant case. Okay, these are called immediate deflection using the elastic equations. However, in the case of reinforced concrete, as you know that concrete will crack well below the ultimate loads. Therefore, the elastic deflection equation cannot be directly used. We must have to use the reduced moment of inertia because the moment of inertia was substantially reduced due to cracking in the reinforced concrete member. Okay. Next is the L. What L shall be used in this elastic equation? This shall be equal to the least of Ln plus H, or center displacement with support, which is called span length, and we have seen this in the previous several lectures. Similarly, determination of E. The modulus of elasticity is calculated based on this equation. You should note down this equation, 57,000 Fc prime. And the modulus of elasticity is taken as constant throughout the loading stage of reinforced concrete structure, although it is questionable that why are we using the constant E. However, this inelasticity is covered indirectly by reducing moment of inertia, because the stiffness, flexure stiffness, which is EI by L, the rigidity EI is a product of E and I. So whether you reduce I or you reduce E, it will give us the same result. So for simplicity, we keep E as constant and we reduce I by calculating the cracked reinforced concrete member area, and then by subtracting the cracked area, we calculate the remaining area, which is called the IE, and that IE is used in the calculation of immediate deflection. This is the equation. We are not going to use this equation. We are not going to do any examples on this. This is just for your information. This is a very informative lecture for you. Most of the time, there will be nothing even from this lecture in the examination. This is just to give you an awareness on the importance of serviceability criteria checking in the case of reinforced concrete design. So this is IE M crack. M crack can be calculated using the flexure strength. This equation FRID divided by Y, which is FR is 7.5 C prime. ID is the gross area. MA is the maximum service load moment at the stage for which deflection are being considered, and cracking M crack is the cracking moment again. MA. There is a complete lecture, very detailed lecture in my series of lectures which are available on the website, and that is being taught in the master course of Master of Structural Engineering course is Reinforced Concrete Design 3 or Advanced Reinforced Concrete Structures. Long-term deflection will be caused by shrinkage and creep, as we discussed in the previous slide. The long-term deflection can be calculated indirectly by using this equation. Long-term deflection is equal to delta creep plus delta shrinkage. This is long-term deflection, and this is lambda delta multiplied by delta immediate due to sustained load. Okay, and lambda can be calculated by this equation. So long-term deflection will be calculated based on the short-term deflection. The short-term deflection will be short-term immediate deflection will be multiplied by a factor lambda, and the long-term deflection will be calculated. And lambda is calculated by psi divided by 1 plus 50 rho bar. Rho that is negative reinforcement, or W which is used in the case of doubly reinforced beams. Okay, for simplicity, let me explain to you this with an example so that you understand this. Let's say rho bar is 0. There is no negative reinforcement. Reinforcement uses compression ring. This is compression ring, this is not negative reinforcement, compression reinforcement. So if this is 0, this factor will become 1. Psi can be taken from this table. Let's say we are calculating long-term deflection of after 5 years. So this psi will be equal to, lambda will be equal to 5 divided by 1 plus 0. This will be 5. Okay. So long-term deflection, psi will be equal to 2. Sorry, this is 2. 2 into 1 plus 0.
So long-term deflection due to creep and shrinkage will be 2 times the immediate deflection after 5 years. Whatever immediate deflections are calculated using the previous equations, that delta will be multiplied by 2, and that will give us long-term deflection after 5 years. And any other value, for example, after 12 months, it will be 1.4, after 6 months, 1.2, after 3 months, 1. This information is necessary in order to give some clearance to our windows and doors, so that they are not distorted due to the increased pressure caused by the excessive deflection. ठीक है, आप मेरे ख्याल में समझ रहे हैं चीज़ों को. शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हम मालूम करते हैं प्रीवियस इक्वेशन से, और फिर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हम इस तरह मालूम कर लेते हैं कि इस साई की वैल्यू हम इस टेबल से उठाते हैं और फिर उसको इधर डाल लेते हैं. अगर रो बार 0 हो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, तो ये हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगा, और 2 जब इधर हम डाल लेते हैं तो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हमारी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के 2 टाइम्स होगी. यानी शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन लेट से हमारी 1 इंच है, तो 5 इयर्स बाद ये डिफ्लेक्शन 2 इंच हो जाएगी. और ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि हम जब विंडोज़ डोर्स की फिटिंग करते हैं तो ज़ाहिर है वो 5 साल से पहले हो चुकी होती है, तो फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन रखते हैं कि 1 इंच अगर एडिशनल डिफ्लेक्शन अगर हो भी जाए तो उससे विंडो और डोर जो है उसको टेढ़े ना हो जाए. अच्छा, अब एसीआई कोड के मुताबिक हम डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे, तो मालूम करना है ना. जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके साथ क्या करेंगे. एसीआई कोड के 2 मेथड्स हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल के. एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड में ये है कि डिफ्लेक्शन आप मालूम कर लेते हैं और फिर एसीआई कोड के टेबल्स हैं, ये टेबल्स हैं जिसके मुताबिक आप फिर कंपेयर करते हैं. वो ज़्यादातर बस L/180 आप याद रखें कि मसलन लेट से हमारे पास एक बीम है जिसकी लेंथ है 60 फीट. ओके, 60 फीट अगर उसकी लेंथ है तो आप उसकी ये अलाउएबल डिफ्लेक्शन है. मेरी बात को गौर से सुने. 60 फीट लॉन्ग बीम है, तो 60 फीट लॉन्ग बीम की आप इमीडिएट डिफ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन से. उसके बाद उसकी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन भी मालूम कर सकते हैं प्रीवियस इक्वेशन से. 2 टाइम्स द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन 5 ईयर्स के बाद आपके पास आ जाएगी. फिर ये अलाउएबल डिफ्लेक्शन है एसीआई कोड की. तो उस डिफ्लेक्शन को जो आपने कैलकुलेट कर लिया है वो आप अलाउएबल डिफ्लेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे. अगर वो डिफ्लेक्शन जो आपकी एक्चुअली इक्वेशन से आ रही है, एक्सपेक्टेड डिफ्लेक्शन, वो इन अलाउएबल डिफ्लेक्शन से कम है तो यू शुड बी हैप्पी. लेकिन अगर वो इस अलाउएबल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा है तो फिर आपको बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी. ये इसका जो तमाम डिस्कशन का जो निचोड़ है, कंक्लूजन है, वो ये है. तो इसमें लेट्स से अगर 60 फीट का बीम है और उस पे L/180 के मुताबिक हम उसकी डिफ्लेक्शन मालूम करें तो 60 फीट आपको पता है 60 डिवाइड बाई 180, यानी 60 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 720. 60 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 180, तो उसमें 4 इंच तक इमीडिएट डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड जो है, मैक्सिमम लाइव लोड, ये अलाउएबल है. अगर आप लाइव लोड की वजह से डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं, लेट से वो 4.5 इंच आ गई, तो इसका मतलब है कि आपको बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी. अदरवाइज अगर वो 2 इंच 3 इंच 4 इंच से कम है तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एसीआई कोड इट इज़ करेक्ट. सो एक तो ये तरीका है कि आप डिफ्लेक्शन मालूम करें यूजिंग दिस इक्वेशंस, और फिर अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो कि टेबल 24.2.2 है इसके मुताबिक जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन से कंपेयर करें. अगर आपकी कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन अलाउएबल डिफ्लेक्शन से कम आ गई तो ठीक है, बस आप सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं. लेकिन अगर आपकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गई तो फिर ये क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे, डिफ्लेक्शन आपको बढ़ानी पड़ेगी. ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया. और इनडायरेक्ट तरीका ये है जिस तरह के हम स्लैब्स ऑफ बीम में करते रहे हैं कि मिनिमम थिकनेस हम लेते हैं. इन द केस ऑफ वन वे स्लैब आपने देखा L/20, L/24, L/28, और इक्वेशन बीम्स में L/16. इन इक्वेशन से आप जब इनिशियली डेप्थ ऑफ द बीम या स्लैब्स ले लें तो ज़्यादा चांस ये है कि ये डेप्थ आपका काम कर लेगा और इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगी. लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये इसमें लोड नहीं है. लोड अगर ज़्यादा हो जाए तो उस पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो सकती है. इस तरह स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया भी इसमें नहीं है, और भी चीज़ें नहीं है, सिर्फ लेंथ है.
तो छोटे स्पेंस के लिए तो ये काम कर लेगा, लेकिन अगर स्पेंस बहुत ज़्यादा हों तो उसमें फिर ये मिनिमम थिकनेस वाले जो इक्वेशंस है ये काम नहीं करेगी और आपको थिकनेस ज़रा ज़्यादा एज्यूम करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब भी हम स्लैब और बीम के साइज सिलेक्ट करते थे तो हम मिनिमम साइज से थोड़ा सा ज़्यादा साइज एज्यूम कर लेते थे, और उसका ये रीज़न ये है कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहते थे कि हम ज़्यादा ज़रा थिकनेस एज्यूम कर लें और फिर बाद में डिफ्लेक्शन के में मसले ना हो, इस वजह से हम उधर ज़्यादा थिकनेस एज्यूम कर लेते थे। ठीक है जी, आगे जाएं। यस सर। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। ठीक, नेक्स्ट क्रैकिंग है। ये बात याद रखें कि रिइंफोर्स कंक्रीट का जो भी मेंबर होगा वो क्रैक जरूर होगा। All RC beams crack, generally starting at loads well below service level and possibly even prior to loading due to restraint shrinkage. लेकिन डिजाइन में बस हमें सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि क्रैक्स की विड्थ ज़्यादा ना हो, यानी हेयर लाइन क्रैक्स हो विजिबल ना हो। एंड नॉर्मली रिइंफोर्स कंक्रीट में हेयर लाइन क्रैक्स तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हमें विजिबल नहीं होते। इस वजह से हम उसको कोड अलाउ करता है क्योंकि उसमें करोजन भी नहीं हो सकती है और वो दे आर ऑलमोस्ट इनविजिबल टू कैजुअल ऑब्जर्वर, यानी आप बिल्डिंग में दाखिल होते आपको नजर नहीं आते, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको विजिबल भी हो जाएगी और फिर उसमें करोजन भी हो सकती है। इसलिए एशियाई कोड ने उसका क्राइटेरिया मुकर्रर किया है। एशियाई कोड सेज दैट द विड्थ ऑफ क्रैक्स, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रैक इज 0.01 इंच विच इज 0.4 मिलीमीटर। इससे ज़्यादा क्रैक विड्थ जो है आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये सर्विस लेवल पे, सर्विस लोड पर, अल्टीमेट लोड पे तो जाहिर है कि सब कुछ क्रैक हो चुका होगा, लेकिन सर्विस लोड पे, सर्विस लोड्स पे जो आपके पास नॉर्मल लोड्स हैं, अनफैक्टर्ड लोड्स, उस पे क्रैक की विड्थ जो है वो 0.4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे करोजन भी फिर हो सकता है स्टील में और बाकी विजिबल भी हो जाएगा। तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू 0.016 इंच या 0.4 मिलीमीटर की ECI कोड ने रखी है। इसको हम कोड इसको कैसे इंश्योर करता है? कोड इसको दो तरीकों से इंश्योर करता है। ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट तरीका है कि असल में क्रैक विड्थ जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बात आप याद रखें। क्रैक विड्थ डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आपका कवर जो है, ये कवर जो हम नीचे देते हैं ना स्टील बार्स को, अगर ये कवर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो इधर क्रैक हमें विजिबल आ जाएगा। और क्योंकि आपको पता है कि टेंशन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फाइबर में होगा, यानी इधर होगा, और हमें ये स्टील बार जैसे करीब डालने चाहिए, लेकिन हम बहुत करीब इसलिए नहीं डालते कि इसकी करोजन हो सकती है, लिहाजा हम उसको थोड़ा सा ऊपर डाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसको ऊपर डाल दें तो ये जो नीचे का जोन है ये खाली रह जाएगा, स्टील के बगैर रह जाएगा, और सबसे पहले इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे और उस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये क्रैक आ जाएगा। ये क्रैक अगर फिर ऊपर नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऊपर स्टील है, लेकिन नीचे से क्रैक आ जाएगा जो कि स्टील को एक्सपोज कर देगा रस्टिंग और करोजन को, रस्टिंग और करोजन के लिए स्टील को एक्सपोज कर देगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम इसका कवर बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा कवर जो है का ये नुकसान है। और दूसरा जो है इसमें फैक्टर स्टील के दरमियान स्पेसिंग का है। अगर स्पेसिंग हमारे स्टील बार्स का बहुत ज़्यादा हो, यानी एक बार हम एक बीम के कोने में और दूसरा दूसरे कोने में रख दें तो उसके दरमियान का तमाम स्पेस खाली हो जाएगा और उधर भी क्रैक आ सकता है। लिहाजा ACI कोड ये कहता है कि आप कवर भी ज़्यादा न दें, कवर भी बस नॉर्मल जो 1.5 इंच 1.2 इंच तक मैक्सिमम, और स्पेसिंग भी बार्स के दरमियान ज़्यादा न करें। इसके लिए ACI कोड ने एक तरीक़ेकार निकाला है, वो कहते हैं कि स्पेसिंग अगर आप इस फार्मूले से निकाल दें और ये स्पेसिंग आपकी ठीक हो तो आपका बीम जो है ये 0.4 मिलीमीटर से कम क्रैक होगा, उससे ज़्यादा क्रैक नहीं होगा। तो ये आप ज़रा गौर से देखें, स्पेसिंग बिटवीन द बार्स सेंटर टू सेंटर ये कितनी होनी चाहिए? 540 डिवाइड बाई FS। FS FY के बराबर नहीं है। FS जो है वो ACI कोड के मुताबिक आपका 0.6 टाइम्स FY होगा। दिस FS विल बी इक्वल टू, क्योंकि अल्टीमेट पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस पे चेक कर रहे हैं, और सर्विस पे ज़्यादा चांस ये है कि FS जो है तकरीबन 0.6 FY तक पहुंच चुका होगा सर्विस लोड पर, अभी FY तक ये नहीं पहुंचा होगा। तो 540 डिवाइड बाई 0.6 FY माइनस 2.5 CC, CC इज द कवर। तो कवर आमतौर पे ये 2 इंच अगर हम ले लें तो 2.5 इंटू 2 ये 5 इंच हो जाएगा, और आगे जो है 540 डिवाइड बाई 0.6 FY हम ले लें
इससे जो वैल्यू हमारे पास आ जाए, इससे ज़्यादा स्पेसिंग आप इधर नहीं देंगे दो बार्स के दरमियान। अगर इससे ज़्यादा स्पेसिंग देंगे तो फिर क्रैक आ सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 12/36 FS है। इन दोनों में जो कम वैल्यू हो, इन दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो कम वैल्यू हो, उसको हम स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि दो बार के दरमियान स्पेसिंग बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है जी। FS वैल्यू इज 0.6 FY। इसके लिए अगर हमें ग्राफ ड्रा कर दें तो ग्राफ इस किस्म का होगा। ये सबसे सबसे ऊपर जो आपको ये कर्व मिल रहा है, तो ये ग्रेड 40 स्टील के लिए है। दिस इज फॉर ग्रेड 40 स्टील। ग्रेड 40 स्टील का 0.6 FY कितना होगा जी? 0.6 FY 24 KSI। अगर 24 KSI हमारे पास FS हो और कवर हमारे पास, अब कवर हमारे पास दूसरा वेरिएबल है। अगर कवर हमारे पास 9 इंच हो तो बार की स्पेसिंग कितनी होगी? बिल्कुल करीब करीब, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अगर 8 इंच हमारे पास कवर हो तो 2 इंच की स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है, ये जो वाई एक्सिस पे ये स्पेसिंग बिटवीन द बार्स है। तो कवर 9 इंच का भी नहीं हो सकता, 8 का भी, 7 का। ये कवर तो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास 3 इंच कवर हो, जो कि आमतौर पे हम फाउंडेशन में डालते हैं, फाउंडेशन में हमारा 3 इंच कवर होता है, तो हमारे पास ग्रेड 40 के स्टील के केस में कम से कम स्पेसिंग बिटवीन द बार 15 इंच, यानी 15 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं हो सकती है। चाहे आप कोई भी बार डायमीटर इस्तेमाल करें, लेकिन 15 इंच से ज़्यादा की स्पेसिंग जब आप डालेंगे तो क्रैक आ जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेड 60 के लिए देंगे तो ये स्पेसिंग सिर्फ 7.5 इंच है। इसका मतलब है कि जब भी आपका कोई कंक्रीट एलिमेंट डायरेक्ट सॉइल के साथ इन कांटेक्ट हो या वाटर के साथ इन कांटेक्ट हो, तो आपको पता है कि आप 3 इंच कवर लेंगे। 3 इंच कवर जब आप लेंगे तो ग्रेड 40 स्टील के केस में, चाहे वो बीम हो या स्लैब हो या फाउंडेशन हो, उसमें स्टील की स्पेसिंग 15 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ग्रेड 60 के केस में ये 7.5 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट उधर ऐसी हो कि आप 10 इंच स्पेसिंग भी काफ़ी हो, लेकिन आप उसको 7.5 इंच कम से कम स्पेसिंग इसकी रखेंगे, आप बार डायमीटर कम करके ये स्पेसिंग फिर अचीव कर सकते हैं। तो ये इसका आइडिया है। और उससे ज़्यादा अगर ग्रेड 70 हो तो ये उसके लिए 75 के लिए 45 के हिसाब और स्पेसिंग और भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये स्पेसिंग बिटवीन द बार जो है, इसको ये इक्वेशन जो मैंने आपको, इसमें तकरीबन अगर आप 540 डिवाइड बाई 5, इससे आप मालूम कर सकते हैं। आप अगर इक्वेशन जल्दी से कर लें कि 540 डिवाइडेड बाई ग्रेड 60 के लिए करेंगे 36 हो जाएगा, तो इससे 15 आ जाएगा। दिस विल गिव मी 540 डिवाइड बाई 36, 15 माइनस 2.5 सी। तो अगर ये 3 इंच हो, 3 इंच माइनस 2.5 इंटू 3, तो दिस विल गिव मी 7.5 इंच। ये 7.5 इंच से आ जाएगा ग्रेड 60 के लिए, जो कि ये 7.5 इंच। तो 7.5 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग आप नहीं रखेंगे बिटवीन द बार्स अगर आपने क्रैक विड्थ को लिमिट करना है 0.4 मिलीमीटर तक। This was all about this lecture. If you have any question, you are welcome to ask questions. Otherwise, the lecture is over. Any question, please? कोई क्वेश्चन है जी? नो सर, क्लियर। देख लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, खैर आप 4-5 मिनट ले लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, अदरवाइज जब भी आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ जाए तो आप हमें एक पोस्ट कर सकते हैं अपने गूगल क्लासरूम में भी, और या मेरे टीचिंग असिस्टेंट को भी कर सकते हैं, और हम आपको एग्जामिनेशन से पहले इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर वो आपकी साइट खुलती ही नहीं। वेबसाइट हमारी? जी सर। नहीं, उसमें मसला था, लेकिन अब तो ठीक हो गया है। सर मैंने क्लास से पहले चेक किया था। अच्छा, वो हम देख लेंगे, फिर देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ओके सर। गूगल क्लासरूम तो ठीक है ना, उसमें तो आप आ सकते हैं ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर ये आपने 3 जो क्रैक होती है, हेयर लाइन क्रैक्स, हाँ हाँ। सर इसका कुछ भी असर नहीं होता? नहीं, कुछ असर नहीं होता, हेयर लाइन क्रैक का कुछ असर नहीं होता है। ओके सर।
तो सर ये तो बाद में इसकी विड्थ ज़्यादा भी हो सकती है इसकी वजह से ना। तो यही तो इसके लिए तो ये लेक्चर था ना कि यस सर। ज्यादा से बचाने के लिए आपको स्पेसिंग अगर आप इस तरह रखेंगे तो फिर ये नहीं बढ़े। एक्चुअल विड्थ ऑफ द क्रैक की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, इस लेक्चर में नहीं है। हमारा जो लेक्चर है ना एमएससी का सर्विसिबिलिटी पर, उसमें सारी चीजें मौजूद है, लेकिन ये तो सिर्फ आपको ये बताना था कि सिर्फ स्टेंट डिजाइन कंप्लीट डिजाइन नहीं है, ये चीजें भी चेक करनी होती है, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और भी काफी सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर करना था कि स्टेंट डिजाइन जो है ये कंप्लीट डिजाइन नहीं है, उसमें ज्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं सर्विसिबिलिटी के साथ होते हैं। स्टेंट डिजाइन तो कोलैप्स तो इज वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, ज्यादातर इश्यूज तो सर्विसिबिलिटी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर वेबसाइट काम कर रहा है सर, अभी मैंने चेक किया। काम कर रहा है? जी जी। तो ठीक है, ये फिर बता दें इनको, एक दो का कह रहा है कि काम नहीं कर रहा। कोई हो सकता है कि एड्रेस में इनका फर्क हो। अभी मैंने चेक किया। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर काइंडली वो सीपी जरा एक्सप्लेन करते हैं। हमने लास्ट 2 क्लासेस से आपके टीए को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक सर एक्सप्लेन नहीं किया गया। अच्छा, वो हमारे पास अभी इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है। समी बताएं जरा इसको सीपी के बारे में। जी सर। समी जी जी। इनको जरा सीपी के बारे में बताएं जी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हमने इनको दिया है उसके बाद। अच्छा ठीक है, मैं आपका क्या क्वेश्चन है उसके बारे में? सर उसमें हमें असल में 2 जगह पे इश्यूज आ रहे थे, तो वो सर से कंफर्म करने थे। और तो आप जरा भेज देना, हमें भेज दें, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, तो सर मतलब एक थोड़ी जनरल एक्सप्लेनेशन भी अगर कर देते तो अच्छा हो जाता सर। तो आप क्वेश्चन करें, हम जवाब देंगे। ठीक है सर। सर उसमें दोषना कुछ नहीं था सर, तो मैंने सॉल्व किया है सर, बिल्कुल क्लियर था सर। ठीक है, अगर इसको मसला हो तो खैर आप हेल्प कर लें एक दूसरे के, कोई इशू नहीं है। और सर ये सीपी की डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती सर? जो उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो तो हमने आज टॉपिक में कवर किए। ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा, एक हफ्ता कर ले। मैंने आज वैसे भी एज ए डीन उसकी एक्सटेंशन एक हफ्ते के लिए दे दी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और कुछ? चलो ठीक है जी, ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सबको खुश रखे और इम्तिहान में कामयाब करे। बस ये, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो हमारे साथ रब्ता रखें, इंशाल्लाह समीउल्लाह को या मुझे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हम आपका जो भी सवाल आ जाए इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी।